Hello, my name is Naumeena Suhail, and we are here to discuss power of presence. Let's become a support system for breast cancer and warriors. We initially in many podcast webinars, people have discussed how to do a partial checkup or how to deal with it. So they are here today. We are talking about how you can give them a support and what they require while they are going through this. So right now we have two. So with us, we have Afia Islam and Dr. Ikra Nas. And this Afia is an independent consultant and entrepreneur and writer and whatnot. And she's a well-known name in the industry herself. She's a breast cancer survivor, and she has also been a support for her family members as well. Uh, I'm not going to say furthermore. I want to talk to them. And then on the other hand, we have a very senior clinical psychologist, and she's also a senior lecturer at IPP, Dr. Ikra Nas. She will be sharing that her experience when these breast cancer survivors or the cancer survivors or the patients come to her and what they're going through, what kind of issues, and their family are basically creating further issues for them. So we are going to discuss that. Starting from Afia, I would like to do that because I have like so many questions for her since she is on the side of it. So Afia, if you can tell us about the when did you get to know that you have your family has like a genetic family history of breast and ovarian cancer? So first of all, I'm sorry, Naumeena, I can't really hear you properly. There's a lot of Hello, I can't hear you, Afia. I'm just saying, when did you get to know that you have a genetic family history of breast and ovarian cancer? Can you hear me when I answer? Because I can hardly hear your question. But I Yes, could just, ma'am, we can hear you. without any Okay. problem. Nope. And can you hear me as well, Nas? Yes, No, there's a lot of static that I'm getting. But anyway, I think I picked up the gist of what you said. You're asking about the familial link in of breast and ovarian Yes, the cancer. genetic issue, and when you get to know about your family problem about this, and yes. So, I mean, we got to know about it, or actually, we didn't really need for the results of the test to come in to know that there is a family link because we knew about the family history of the grandmother having it, her sister having it, her niece having it, and then, of course, my mother, her two sisters. So, that family link was very, very clear. But it's because at the time when my mother was detected, there was this team from Canada that was here doing research on genetics and familial links. So they took our samples, and it takes years for the samples to be tested and for the reports to come in because it's one of the largest and most renowned institute in Canada. So we got the result of not just the family link, but you take, so there are two patients that were detected earlier, that they were called in blood samples. And they are called BRCA1 and 2, BRCA1 and BRCA2, one pertaining to breast and the other two ovarian cancer. And there was a link of both cancers. So, I mean, my mother, my aunts, and my grandmother did not have breast cancer. They had ovarian cancer, but I had breast cancer. My sister had breast cancer. My sister's daughter had breast cancer, and Wow. my cousins did. So I mean, it Okay. was like double jeopardy, knowing that there was a family link, and then also when the results came in, and which included for my younger daughter who got herself tested. Uh, so there was clear in the genetic mutation. So it was very pretty.
that this is a clear link, and this will carry on into the next generation. So, I mean, I understand is that it's a very tough life, which and a long journey of on and off. Someone in your family, close family, is going through this, and you have been really a voice on this matter for the longest time. I understand this. So, how is your family coping up with this? And when also do tell us a bit about your journey as well when you get to know about it, and how is it reaction, how young your kids were, and how did you cope with that whole situation? So it was like, because of the very close thing, when I was detected, or rather when I suspected that there was a lump in my breast, that was a time when my mother had just sort of come out of her third relapse. So, I mean, the awareness about cancer was pretty heightened. And mentally, then I was prepared to hear that this would be cancerous. And I mean, I went through the drill, I went through the for the test, the biopsy, the lumpectomy, etc. And it was. And my youngest was 3.5, less than 3.5 at that time. My oldest was what, 9. My son was 8. So they were Okay. young. Children were Very. young at that time. And so I sort of, also that my mother was visiting me those days. So I wanted to shield her from the news that I had, because I know that what you yourself go through, it's far more painful. It's far, the pain and the worry is far more intense if it's your child who has it. Now, even if I was a mother of 3 children, for her I was concerned. And I wanted I to right. shield her. And I did for as long as I could. She had no clue that I had been in hospital. She had no clue that I had, and because I came back and I tried to function as normally as I could, doing all the housework, getting the school gets ready for school, etc. But it was only after my wound, this thing, the surgery wound had healed, and I had gone to the oncologist, and he told me that it had spread. It wasn't a localized cancer, and that I would be requiring chemotherapy. And I knew what that meant, that I would be losing my hair, which at that time, if you've known me that long, Yeah, I was know. below my hips at that time. So, I mean, I knew that I was going to change below recognition. And if I suddenly came like that in front of my mother, that would be very traumatic for her. So that is when I sat her down and I told her that, look, I'm going to do whatever it takes, whatever. I know how difficult the treatment is, because I used to see her undergoing it. I saw my aunts, undergoing chemotherapy and all the other side effects. But I said, I will do all of that. I've got young children. Obviously, I have that to look forward to. So I Mm-hmm. would be the one who would say, no, I can't go for this, because I know, and within my own circle, I have known people to sort of reject the idea of treatment, because they, according to them, from what they have seen and from what they have heard, it is worse than the disease, which isn't really true. Because, left untreated, that's like a sure shot death sentence that you are moving towards. I mean, okay, nobody can predict the time of death, but when there is a treatment available, there's absolutely no reason not to take recourse to that. So I was mentally ready to go through that entire mill, and I was going to take treatment. And So, that's what question why. is, yeah. So I wanted to ask you one more thing is before I go to Dr. Nas, is that with your long hair and this all those sort of thing at that time again, going to a psychiatrist for help or for mental peace or to someone who can understand what you're going through and help you go through this. So it's always a taboo, and still now it's a taboo, but still people are accepting it and they are realizing that they need help. So at that time there was nothing. So did you go for something like this, or you had a nice strong family system that helped you with all those things, or you felt like you needed someone you just want to talk to openly without even say realizing that what the other person is going to
think or say. So, what was your thought? Then I'll go to Dr. Nas and we can just continue with this whole thing. So thank you for having her here, because I wish there were more Dr. Nas at that time. You know what? I'm sharing my experience of a quarter of a century ago. It sounds a lot longer like that, but 25 years is a very long time. And Yes. medical science has advanced. The society hasn't changed as much as I would love to see it change, but there has been a change. That is why people like her exist in our midst now. And there are people who go for her. I'm sure, or she would have given this field up. Uh, yeah, I know. I mean, so there is acceptability now. There is a realization now. I'm not very sure of how much of a referral there is, to the Mhm. patients who actually feel traumatized by losing not just a part of our body, but hair also means a lot. Hair is part of your personality. It's what you present to the world when you're that completes you. So, Exactly. so it is very traumatic uh, to become like that, to become without any hair. But the thing is that at that time, we didn't know that any help was there. Also, we didn't, the doctors didn't really refer that, if you find this very traumatizing, there are such doctors available. And another thing which we also know that I do have a very good, so people usually think of family. I have a family, large family circle in which I include my friends. And you know some of them. So I was Mm. there for my friend. So one thing, after I had confided with my mother, she stayed at Mm. my. She didn't go back home. She sort of, she said no. I whatever way. Obviously, her dua was there. A source of great strength. And if I hadn't told her, every mother prays for their children regardless. But for a person, for a child who is suffering for something like as dangerous as it, then there's this extra prayers. So I would release on that. But my children were too small at that time to realize, especially because we made it sure, I also made it sure that their routine would not be disturbed. I would be there when they were back from school. I would be doing the same things. I would be going to office. I had to shuffle my routine of going to office on, the Yes. first how I would react to it, and then maybe I would change the timing. I would go to office after because the first few hours they give you this coverage of drugs which don't make you feel very ill. So after coming having chemo, after going to the office, I would be so dead tired in the night that I would sleep it off. So you know, another 6 to 7, 12 hours passed. So she started after the second day. It was, trying out different things. And then, of course, I knew that my friends were there. They were there all the time. They were there physically, they were there in spirit, they were there online. Those who were here, they would just come visit every time I went, came back from the doctor. They would be there at the house within minutes, bringing flowers, bringing, the food, whatever, or taking my kids out. I mean, that support over there was what actually never really made me realize what a terrible thing I was battling with, because it didn't really seem matter. So that was the blessing in disguise for you, but not a lot of people get that. Anyway, so let's hear what Dr. Ikra has to say on this point when it comes to people, the cancer survivors or the good people who are going through or who just get to know that they have cancer, and what kind of uh, uh, her patients have been saying, and what kind of a different level of patients have been. Because I think so, you have lucky, one of those few good lucky ones, people who has a good support system. So, Dr. Ikra, the stage is to you. The ball is in your court now. Please start. Thank you. Dr. Ikra, you there? Hello. Hello. Am I Yes. audible? Yeah. Thank you so much for giving me this opportunity, and thank you for sharing your personal experience with us. Let's start from this point of support system. बहुत सारे लोग हमारे यहाँ they are very lucky so that they have a good support system and they have
and they have such people who support them, who appreciate them, who motivate them, and who try to take them out from that difficult situation. uh, in few of the cases we see these types of things, but sometimes this support also gives a negative effect to our clients. As in, like, for example, I just want to give an example with respect to a case. There was a lady, she was coming not for her own therapy, but she brought her family. She came with the case and she came with this complaint that please take my whole family for the family therapy and a family counseling. We said why. When I asked her why, she said that I'm diagnosed with a cancer, breast cancer, and my family is so much anxious that they are giving me so much panic vibes towards me. They are throwing panic vibes towards me. They are treating me like that I'm a small kid, and they are just giving me different kind of medicines. Like, we are using herbal medicines, we are also using uh, what can I say, homeopathic, and different types of modes of medications they are giving me. So it's very much hectic for me to deal with this all kind of situation. Many people have the support, but when the support cross the line, this gives a negative vibe to the client. So client usually, uh, she came and she said that I don't want the counseling, but my family needs some counseling. तो हम लोगों ने उन्हें जो है वो फिर family counseling के लिए we just call them for the family counseling, and they have different types of views related to cancer, related like different kinds of myths related to cancer. और हर एक का अपना अपना अलग experience था of their own social society. What they have listened from other person, they are throwing to that client. Like, for example, they are using the manuka honey, or कोई उनको कोई जड़ी बूटी खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है. Like, proper एक इलाज और diagnosis के बाद they are still throwing the vibes. तो हमारे पास सपोर्ट सिस्टम तो अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी वो सपोर्ट सिस्टम जब एक लाइन क्रॉस कर जाता है तो वो क्लाइंट हमारे क्लाइंट के लिए भी मसला कर जाता है. अच्छा, फिर उसके बाद क्योंकि हमारे यहाँ एक इस चीज का रिवाज जो है वो कम है, इस चीज का कल्चर, वी आर नॉट सो मच ऑफ अवेयरनेस रिलेटेड टू द ब्रेस्ट कैंसर. तो अक्सर क्लाइंट्स जो हमारे पास आते हैं, उनकी एक ही शिकायत होती है कि देयर इज नो एक्सेप्टेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, लाइक फॉर द फैमिली. लाइक, माय फैमिली इज नॉट एक्सेप्टिंग कि मुझे भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, या हमारी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. या तो जैसे अभी हमारे साथ जो साथी हैं, उन्होंने शी सेड कि जी उनकी फैमिली में था, तो that was they have a good information about everything. मगर जब किसी को कोई न्यू कोई बीमारी होती है फैमिली में, तो they have lots and lots of myths, and they have lots and lots of anxiousness, plus they have lots of fears related to that whole scenario. बहुत कुछ कुछ हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो ये कहते हैं कि जी हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं कर रही है. आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि वो इस चीज के अंदर उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है. अब जब उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है, तो दैट्स व्हाई मेरी जो पूरी क्लाइंट की, यानी मेरी क्लाइंट की जो मोटिवेशन है, दैट वाज डाउन. वो इतनी ज्यादा डाउन थी दैट शी वाज नॉट रिस्पोंडिंग टुवर्ड्स द कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, जो थेरेपीज उनके साथ हुई फॉर दैट क्योर ऑफ कैंसर, वो बिल्कुल भी जो है ना उसको वो नहीं कर पा रही थी, उसकी तरफ रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी, बिकॉज उनके अंदर एक मोटिवेशन नहीं थी. दूसरी चीज ये है कि उनके अंदर एक विल नहीं थी कि व्हेन माय फैमिली इज नॉट विद मी, हाउ कैन आई सर्वाइव, मैं लड़ूं कैसे, इस जंग से मैं लड़ूं कैसे. तो बहुत सारी दफा सपोर्ट होना अच्छा है, सपोर्ट का ज्यादा होना भी बुरा हो जाता है, और सपोर्ट का कम या ना होना भी बुरा हो जाता है. तो हम सबको ये चाहिए कि अगर हमारे इर्द गिर्द हमारी फैमिली में इफ देयर इज समवन हु इज डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर, तो हम उस चीज को एक्सेप्ट करें, और हम अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से संभाल के दूसरे को जो है वो मोटिवेट, उस क्लाइंट को, उस पेशेंट को मोटिवेट कर सकें. तीसरी चीज ये कि हमारे यहाँ प्रॉपरली मेडिसिन काउंसलिंग नहीं होती है. बहुत सारे इदारे या बहुत सारी जगहों पे मैंने, यानी मेरे पास ऐसे इदारों से क्लाइंट्स आए हैं जो डिफरेंट मेडिसिन यूज कर रहे हैं फॉर द क्योर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. उनको ठीक तरीके से उनकी बीमारी के हवाले से ही नहीं बताया जाता है. अच्छा, यहाँ पे दो चीजें हो जाती हैं. एक तो या तो बहुत तफसील से बता दिया जाता है कि जी आपके पास सिर्फ 1 महीना या 2 महीने रह गए, ठीक है, तो वहीं पे क्लाइंट की जो है वो विल खत्म हो जाती है. वन ऑफ माय क्लाइंट, उनका ऐसा ही हुआ कि उनको पता चल गया था, उनको डॉक्टर ने साफ बता दिया कि जी आपके पास कम टाइम रह गया है. तो वो कम टाइम जो था वो बिल्कुल ही कम हो गया, और वो किसी चीज को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी.
और कभी कभी जो है हम क्लाइंट को इतनी वेग आंसर देते हैं, पेशेंट को, ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को इतने वेग आंसर्स दे रहे होते हैं कि वो खुद परेशान हो जाता है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, हो क्यों रहा है ये। ठीक है, तो हम उसके जो WH क्वेश्चंस होते हैं, हम उनको बिल्कुल जो है ना जवाब देने की पोजीशन में नहीं होता है। तो हमें कुछ तरह के डोमेन्स यूज करने चाहिए ताकि हम क्लाइंट को, अपने पेशेंट को ये बता सकें कि भाई आपका डायग्नोसिस किस स्टेज पे है और आगे वो किस हद तक जा सकता है, सो दैट, और उसको इतनी सेफ लैंग्वेज इस्तेमाल करें, वी हैव टू यूज अ सेफ वर्बेटम फॉर देम, ताकि वो बेहतर तरीके से अपना इलाज कर सकें। क्योंकि इफ दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ विल पावर या मोटिवेशन, तो वो किसी भी किस्म की मेडिकेशन या किसी भी किस्म के और ट्रीटमेंट को जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेंगे। तो एक मैं डॉक्टर, बड़ा इस पर हम बात करेंगे रिगार्डिंग what kind of a languages, what kind of a talks we should talk to the people who are going through or who have just got in, because देखिए एक तो सपोर्ट सिस्टम होता है कि भाई कोई रिस्पॉन्स कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा एक होता है कि भाई एग्जैक्टली what one needs to talk and tell them and give them the encouragement, which you have really mentioned it, and उसको हम फर्दर बात करते हैं। लेट्स सी कि आफिया को, when it comes to Afia, is there any one point where you were like, and I'm sure there will be many points when you were depressed or you were really down, or there's a, and any specific point or any area where when you really were down and something your friends or your support system did for you that really helped you, get back, and something which you always remember that part. So if you want to share that, it's an example, one or two, that would be nice. अच्छा, देखें, आई कांट पुट माई फिंगर टू एनी स्पेसिफिक टाइम और इंसिडेंट जिसमें मैं डाउन हूँ। जाहिर है आपके जहन में बहुत सी सोचें आती हैं, आप अपने छोटे बच्चों को देखते हैं तो आपको Exactly. पता नहीं होता कि आप इनको आगे आप इनको परवान चढ़ा सकेंगे, किस पोजीशन में होंगे। But you know, it Right. can go either way. I was stage 3. I was doing all the right things as far as the medicine was concerned. लेकिन मैंने आखिर वो मैं जितनों का इलाज होते देखा है, nobody becomes immortal with इलाज। लेकिन सबसे पहली बात समझते हैं कि इलाज हो गया तो बस अब कुछ भी नहीं होगा आइंदा। ऐसी बात नहीं है। Everybody is mortal. Everybody has to die sometime. Maybe not necessarily from this disease. तो एक तो वो चीज है कि ये सपोर्ट सिस्टम ही था जिसने मुझे इसको इससे फोकस नहीं करने दिया मुझे इस चीज पे। और इससे बहुत बड़ा क्रेडिट मेरे ऑफिस कॉलीग्स का भी जाता है। यू नो द वे माय बॉस, दैट टाइम आई वाज वर्किंग द एडिटर ऑफ क्रिकेटर मैगजीन, और द वे ही वाज सपोर्टिव, जहां मुझे शील्ड करने की जरूरत थी, ही paid to my mother to shield her while I was in hospital, ताकि उन्हें कि मैं कहाँ हूँ, Yes, 2 दिन yes. के लिए चल That is कि मैं not मुझे कवरेज के लिए भेजा है, यू नो आउट ऑफ टाउन कवरेज के लिए भेजा हुआ है उसको, और उससे मेरी बात हो गई है, वो ठीक है। क्योंकि वो जमाना मत भूलें कि ना मोबाइल फोन होते थे ना कुछ, तो ही वो थे कि मेरी बात हो गया और वो शीज ओके और वो परसों आएगी, आज फला जगह जा रही है फला। So you know, I count myself as somebody very lucky. फिर I had a friend who उसने कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं कि जिनके साथ आप आर्ग्यू नहीं करते या अपने आप को वो दिखाते नहीं है कि आई एम सो स्ट्रॉन्ग। माय फ्रेंड सिंपली सेड, सारी उम्र तुमने काम किया है, नाउ टेक इट इजी। और इजी से ये मुराद नहीं था कि मैं बिस्तर पे पड़ जाऊं। उन्होंने कहा कि हर चीज खुद बिकॉज आई वुड जस्ट एट माई सेल्फ। उन्होंने कहा मैं एक आदमी को भेजूंगी जो सारा हैवी वर्क तुम्हारे पास से करेगा। सो यू नो ऑल द डीप फ्राइंग या बच्चे जिस तरह की चीजें, अब हम हेल्थ कॉन्शियस जमाने से, थैंक गॉड में पहले की औलाद है मेरी, जब हम उनको सब कुछ दे देते थे खाने को, चाहे डीप फ्राइड हो चाहे मीठा हो, हम कुछ दिखाते थे। So I'm not. I mean, I'm not judging the parents who don't do that anyway. My own daughter doesn't do that to my granddaughter. all things have changed a lot over the centuries. Enjoy so I think it's those things just to take time. गर्मी में खड़े होके आप खाना पका रहे हैं, उसके बाद ये छोड़ दो, ये मत करो तुम। So she said the person. So she didn't ask me that it says, can I do this for you? She said, this is the person who's coming. और अब तुम ये part नहीं करोगे। So basically, they were together working with you, along with you. They were not thinking that you were sick or anything. They were not making you feel like you were sick.
So they were just along What? Yes, helping you out. जब मुझे कहा गया, जैसे इन्होंने कहा कि इनके पास पेशेंट आई कि वो मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, मे बी लाइक स्केट और मे बी लाइक एन, तो 2 दिन से ज्यादा ये मुझे नहीं चला, बिकॉज जैसे इन्होंने कहा डॉक्टर ने कि हर एक का अपना सोसाइटल बैकग्राउंड होता है, हर एक की अपनी एक्सपीरियंस होती है. When I came Yes. back to the hospital, I was also told, कुर्सी मत घसीटना बैठने के लिए, ये मत करना, वो मत करना, बिल्कुल किसी चीज को हाथ नहीं लगाना. So 2 days, just 2 days after my surgery, when I had to go back for the dressing of the wound, my doctor gave me hell. उसने कहा कि तुम्हारा ये बाजू क्यों है इस तरह से, कि तुम्हारा बाजू स्टिफ हो जाएगा. Why aren't you moving it? तुम घर में जाके सबसे ऊंची जो तुम्हारे घर की शेल्फ है, तुम उसकी डस्टिंग करोगी जाके. Now I have to dusting. But you see, my point is that my doctors understood me, and not just understood me, they explained to me why they wanted me to do something. यही वो डॉक्टर थी जिसने कहा, जब मेरी बहन जो बाहर होती थी, उसने कहा तुम बाहर आ जाओ. मैं कहा बाहर नहीं आऊंगी, मेरे बच्चे छोटे हैं. आई बी मोर वरीड आउटसाइड देन आई विल बी हियर. यहाँ जो इलाज हो रहा है, आई एम ओके विद दैट, आई ट्रस्ट दीस डॉक्टर्स. तो उसने मेरी चीजें मंगाई, तो उसमें जो इन्होंने ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाया, उन्होंने कहा कि इनका पूरे का पूरा जो बगल के नीचे जो लिम्फ नोड्स होती है, वो क्यों नहीं उन्होंने निकाली, जबकि वो उसमें रिपोर्ट में नजर आ रहा है कि उनकी लिम्फ नोड्स में भी कैंसर है. So I brought it off to my doctor, not because I didn't trust her judgment, because my sister was going bonkers with worry. तो उस डॉक्टर ने मुझे सिंपली ये कहा कि देखो, तुमने मुझे अपने मुतालिक बताया था कि तुम जॉब करती हो और तुम करती रहना चाहती हो. तुमने कहा तुम्हारे बच्चे छोटे हैं और सबसे छोटी वाली बेटी से तुम्हारी गोद में और तुम्हारे ऊपर चढ़ते थे. अगर मैं ये सारी निकाल देती तो तुम्हारा वो एक कंडीशन होती है लिम्फेडीमा, जिसमें आपका फ्लूइड जमा हो जाता है बाजू में, तो आप लिटरली अपने बाजू से कुछ नहीं कर सकते कई महीने तक. एंड द डॉक्टर सेड मिजरेबल, ना तुम ड्राइव कर सकती, ना बच्ची को उठा सकती, ना कुछ कर सकती. तो क्योंकि तुम्हारा स्टेज 3 था, तो मुझे पता है कि तुम्हारी कीमोथेरेपी होगी, तो कीमोथेरेपी विल टेक केयर ऑफ द कैंसर इन योर लिम्फ नोड्स. इसलिए मैंने वो नहीं निकाला. आई मीन दैट आंसर was so logical. It made sense. Now it was a bookish thing. The good thing about Pakistani doctors, which other doctors will always, जो मुल्क से बाहर हैं, वो reject करेंगे इस बात को, क्योंकि देखो जो बुक कि ये पाकिस्तानी डॉक्टर अपना दिमाग लगाते हैं, जबकि प्रोटोकॉल जो है वो बने बनाए हैं. Similarly, ट्रीटमेंट आफ्टर, उसके बाद जो फॉलो अप है, 5 साल गुजर गए, जब 10वें साल में मेरा वो जाहिर इंक्रीज करते रहते हैं ना टाइम आपके फॉलो अप का. पहले आपको हर महीने जाना होता है, फिर 2 महीने, फिर 6 महीने, फिर साल में एक दफा, फिर 2 साल में एक दफा. जब 10वां साल हो गया तो ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने मुझे कहा, उससे पहले कहा 10वें साल से, अब आप ये वाला कराएं. मैं आपको ये चीज कह सकती हूँ कि आप ना कराएं. मैं और कई लोग ऐसे हैं उनको ये बात नहीं कह सकती. वो इसलिए कि वो एक ब्लड टेस्ट है जो ब्रेस्ट कैंसर का, वो एक मार्कर होते हैं आपके पास, टेस्ट होता है जिससे अगर कुछ एलिवेटेड हो तो इसका मतलब है समथिंग रॉन्ग. नाउ दीज आर एग्जैक्ट थिंग्स. तो उन्होंने ये कहा कि अगर किसी दिन एलिवेटेड थोड़ा सा हुआ तो तुम क्या करोगे? आई यू गोइंग टू गेट अनदर पार्ट ऑफ योर बॉडी कट ऑफ? क्योंकि ये तो ऊपर नीचे. तो इसलिए तुमको तो मैं ये बात समझा सकती हूँ, बट देयर आर मेनी पेशेंट्स माइन, अगर मैं उनको ये कहूंगी तो दे विल गेट सो फ्रस्ट्रेटेड एंड वरीड कि ये तो हमारा कुछ चेक ही नहीं करना चाहती, उन्हें पता कैसे चलेगा. एक चीज ये, फिर जब 10वां साल हुआ तो 10 साल इज यूजुअली कंसिडर्ड कि आपका सर्वाइवल, यू सर्वाइव, दैट्स व्हेन यू आर कॉल्ड कैंसर सर्वाइवर. After 10 years. आफ्टर 10 years, 5 साल में आपका एडमिशन वगैरह का सिलसिला होता है, तो दैट्स स्टेजेस. अच्छा, उन्होंने मुझे कहा कि यू डोंट नीड टू कम एंड सी मी. उनसे दोस्ती इतनी हो गई थी, तो आई जस्ट लाफ्ड. आई सेड दैट्स वेरी रूड. कहते नहीं, आई मीन यू डोंट नीड टू कम दैट एनीमोर. अगर तुम्हें इत्मीनान नहीं होगा तो साल 2 साल बाद तो तुम्हें अपने कोई चेकअप कराने हो तो करा लेना. बट इन माय ओपिनियन यू डोंट हैव टू गो थ्रू दैट एंटायर गैमेट ऑफ टेस्ट दैट यूज्ड टू बी मैंडेटरी प्रायर टू दिस. तो द डॉक्टर ऑल्सो सीज के वो किसको क्या बता सकते हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है. हमारे यहाँ कितने लोग देखें, ये तो कैंसर की हम बात कर रहे हैं. कितने ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर के पास जब जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि ये वायरल है और वो दवाई कोई नहीं देता, तो देते इस डॉक्टर को तो कुछ आता ही नहीं है, इससे तो दवाई नहीं दी. दे आर डिमांडिंग एंटीबायोटिक्स. तो हमारे यहाँ ऑन डिमांड होता है जी, हमें इंजेक्शन नहीं लगाया डॉक्टर ने, पता नहीं कैसे डॉक्टर है, और मुझे कमजोरी हो रही है, मुझे ड्रिप नहीं लगाई ना. एवरी पर्सन हु नोस कि आप अगर ड्रिप और ये लगवाते हैं तो दे आर एक्चुअली द मेन रीजन फॉर योर हेपेटाइटिस स्प्रेड, योर पंक्चरिंग योर स्किन. And they eat natural
वे ऑफ हीलिंग है वो नहीं हो रही होती है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम भी लो हो जाता है। तो वो सारी चीजें डॉक्टर्स को पता है ना, लेकिन जो लोग उन चीज को एक्सेप्ट नहीं करते वो डिमांड करते हैं, नहीं कि हमें दवाई तो दिया, वायरल की क्या दवाई दी डॉक्टर। So that people don't know, and the doctors sometimes they can explain, sometimes they can't, because उनके पास भी पर पेशेंट रेशियो पे डॉक्टर हमारे पास कितने हैं कि वो हर एक को बैठ के इतनी तफसील से एक चीज बताएं। उसके लिए दूसरे कुछ के सपोर्ट ग्रुप होने चाहिए, काउंसलर्स होने चाहिए। आपके स्कूल में तो जल्दी, लेकिन कॉलेजेस वगैरह में जो चीजें पढ़ाई जाती हैं उसमें ये भी पढ़ाया जाना चाहिए कि व्हाट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड व्हाट इज, यू डोंट हैव टू स्टडी मेडिसिन टू बी एबल टू टेल इन दीज थिंग्स, यू नो, कि कब आप पैराडॉल खाएं और कब आप एंटीबायोटिक लें। Exactly. I do say that basics as a female, ये चीजें as a medically पढ़ानी चाहिए for everyone, even with this whole part as well. Basics female को पता होने चाहिए. The hygiene part is very important. पता होना चाहिए. Apart from that, Dr. Ikra, I wanted to ask you is that कि ये तो एक family आपने हमें scenario बताया था कि family क्या है. Lot of women go through like a mental stress, especially the married woman होती है कि या हमारे husband क्या करेंगे when this has been, our breast will be removed, we will have those surgeries done, they will go to the woman or they will get another marriage done, or the female who have one and their parents go through a psychologist. So if in short you can say that, because I still have a lot of questions and अगर हम इस पर आप थोड़ा सा दें आपके पास input दें। जी बिल्कुल, देखिए कि जैसे हमारे यहाँ यही कहा जाता है कि दैट बॉडी इज द होल स्ट्रक्चर जिससे आप अपने हस्बैंड को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ ये मिथ एक है, बल्कि मिथ क्या है, बल्कि रिसर्च भी, बहुत सारी रिसर्चेस भी ये कहती हैं। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो ये स्टेट करते हैं, उनकी ये स्टेटमेंट होती है कि जी इफ गॉड फॉरबिड मेरा ये ब्रेस्ट रिमूव हो जाता है, ठीक है, ये मेरा बॉडी पार्ट रिमूव हो जाता है, तो मेरा मियाँ तो फिर मेरे काबू में नहीं रहेगा। अच्छा, ये वाले जितने भी ये अगर एक थेरेपिस्ट इसके ऊपर काम करे तो क्लाइंट समझ भी, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये होता है कि जैसे अभी हमने कहा कि जी सोसाइटी क्या कह रही है, हमारा ज्यादा इन्फ्लुएंस इस पे भी हो रहा है। ठीक है, अब कोई अपने हिसाब से हर तरीके से लोग बता रहे हैं ये कर लो, वो कर लो, ऐसा हो गया, लाइक कोई गुड एक्सपीरियंस से शेयर नहीं कर रहा होता, लोग बैड एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे होते हैं, चाहे वो फिर मेल हो फीमेल हो। ठीक है, मेल को भी लोग इसी तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं कि जी तुम्हारी बीवी को ऐसा हो गया, अब तुम्हारा क्या होगा। अरे भाई, क्या होगा, जो हो रहा था वही होता रहेगा, थोड़ा सा सपोर्ट ही तो चाहिए उसे। अच्छा, खवातीन को ये डराते रहते हैं अब तो तुम्हारी बॉडी खराब हो गई, तुम्हारा मियाँ तो इधर उधर जो है ना वो हाथ पांव मारेगा, फिर अब तुम क्या करोगी। तो वो जो एक एंजाइटी है ना, वो जो एक पैनिक है, वो जो एक कॉन्स्टेंट डिप्रेशन की तरफ हमारा क्लाइंट चला जाता है, तो दैट इज वेरी मच पेनफुल फॉर द क्लाइंट एंड फॉर द थेरेपिस्ट एज वेल। कि हमारे पास जब क्लाइंट आ रहा है तो हम उसको हर तरीके से काउंसिल करें, लेकिन जैसे ही वो सोसाइटी में जाता है, वो लोगों की एग्जाम्पल सुनता है, लोगों की बातें सुनता है, लोगों की मन गढ़ंत कहानियां भी होती हैं उसमें, लाजमी नहीं है कि हर एक के साथ कोई एक्सपीरियंस हो या उन्होंने सुना हो, तो वो अपनी चीज को जो है वो उनके सामने रखते हैं विदाउट एविडेंस। तो मैं बस लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज अगर आप कभी भी कोई इस तरह का मिथ सुने, तो किसी से भी सुने, तो प्लीज आस्क फॉर द एविडेंस कि भाई इस चीज का एविडेंस क्या था। हाँ, और अपने आप को इस चीज के लिए रखें दैट इफ यू हैव अ गुड रिलेशनशिप, तो वो चीज आपके मैरिटल उसके ऊपर बिल्कुल असरअंदाज नहीं होगी, दैट विल नॉट इफेक्ट योर मैरिटल रिलेशनशिप। ठीक है, अगर हस्बैंड सपोर्टिव होगा तो ही विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। और बहुत सारे हमने ऐसे जगहों पे केसेस देखे हैं कि जो हस्बैंड से उनके ब्रेस्ट रिमूव होने के बाद भी दे आर इन अ रिलेशनशिप, दे आर इन अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप, और वो अपनी बेगमात से उतना ही खुश हैं जितना पहले थे। हाँ, That's थोड़ा good. And there, it is the cases. Why not? ऐसा तो नहीं कि वो चेंज हो जाती हैं, कुछ नहीं होता है. And there are very advanced systems to, you know, for the surgeries and all this stuff, which can bring things back, right? देखिए, हमारे यहाँ तो अगर हमारे यहाँ तो स्ट्रेच मार्क्स भी ज्यादा हो जाए पेट पे प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो कोई ये नहीं कहता कि देखो ये तुम्हारे बच्चे पैदा किया था उसकी वजह से, बोलेंगे देखो तुम्हारी बीवी बदसूरत हो गई। तो हमारे यहाँ क्या डिफरेंट है, थोड़ा सा लोगों के कॉन्वर्सेशन और लोगों को मैसेज देने का तरीके का डिफरेंस है। फिर तो कैंसर पेशेंट जो सर्जिकल प्रोसीजर से भी गुजरा है और जो बहुत इस तरह के एक्सट्रीम प्रोसीजर से गुजरा है, उसके लिए तो लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। फैमिली तो बात में करेगी, सोसाइटी जो एक्सट्रीम किस्म की एग्जांपल्स देखती है उनके लिए एक्सेप्टेंस होना भी जरूरी है
कि यार ये कर लेंगे आपस में, इन्हें जो करना है कर लेंगे, हमें इनको थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। जैसे हमें बीमारी को स्पेस देना चाहिए, रिलेशनशिप को स्पेस देना चाहिए, इस तरह हमें क्लाइंट को भी स्पेस देनी चाहिए। I understand that. So, Afia, let's go on to other parts since you've been the. अभी हम बात कर रहे थे since what you have gone through, and since आपका genetic family का issue है and your family members have gone through. So, knowing the genetics, so I'm sure आप लोग बहुत doctors के पास गए हैं with your kids because since your daughters are highly prone to this, your nieces are prone to this, so. And early stage पर आप लोग चले गए होंगे doctors के पास. So what the doctor has recommended them? Have you implemented any recommendations? And how, if anything, which can help people or people with the same genetic issue can do to resolve, not get to minimize their chances of getting a cancer. So can you highlight some points on that, please? यस श्योर। अच्छा, मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ जो अभी इन्होंने बात की है कि वो बॉडीली चेंजेस जो हैं उसको भी एज अ सोशल थ्रेट के तौर पे देखा जाता है, विच आई मीन पीपल कैन बी क्रूअल, इसमें कोई शक नहीं है। इनसेंसिटिव कह लें, अगर क्रूअल बहुत स्ट्रॉन्ग लफ्ज है कि वो बगैर सोचे समझे इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बॉडी इमेज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है रादर ऑन दी पर्सनालिटी। एक वजह उसकी ये भी है बिल्कुल कि सही। is that is she a good person? So she will remain a good person even if she is without that one body part. If she is बिल्कुल kind, if she is efficient, if she is intelligent, she will not lose any of those characteristics. You know? तो एक तो ये चीज है कि हमारे यहाँ सोसाइटी में ये बिल्कुल सही कह रही है कि कॉन्वर्सेशन नहीं होती है। तो फैमिली तो जैसे हो, लेकिन दूसरों के अल्फाज जो है ना, इस तरह की चीजें फिर जहन में डालते हैं। एंड ऑल्सो जो आपने कहा कि भाई इसके लिए प्रोसीजर्स भी हैं, अनफॉर्चुनेटली प्रोसीजर्स का सिलसिला यह है कि प्रोसीजर्स तो बहुत अच्छे से हैं ये हमारे यहाँ, क्योंकि यूनिवर्सल हेल्थ केयर नहीं है या बिल्कुल अफोर्डेबल हेल्थ केयर नहीं है, तो वो प्रोसीजर्स फिर कितने लोगों के पास, क्योंकि उनका रिसोर्स नहीं है औरतों के पास इतना ज्यादा, उनको कोई डॉक्टर तक ही ले जाता है, जबकि फीमेल हेल्थ केयर, एंड इट साउंड्स वेरी बिटर, but I've seen it because I don't stay in just a certain class. Female healthcare is hardly the priority, unfortunately, in our country, in our society. तो उसमें एक रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर जो है उसमें उसके लिए अगर कहीं से इस तरह के जो आपके ग्लोबल फंड्स होते हैं उसको एक्सेस करके ये अवेलेबल किया जाए तो कहीं मुमकिन है कि वो उस समझ जो सोसाइटी उसके ऊपर जिम्मेदारी कर देती है। अच्छा, दूसरी चीज जो आप कह रही हैं, आई थिंक इसमें फोरवॉर्न्ड इज फोरआर्म्ड। ब्रेस्ट कैंसर is the most easily treatable cancer. ये हमें Yes. ध्यान में रखना चाहिए कि वो सी वर्ड का फियर जो है ना वो हम अपने ऊपर तारी ना करें, लेकिन उसमें ये कि आपकी फैमिली में अगर एक से दो लोगों को आपके रिश्तेदारों में हुआ है, जनरेशन में नानी को हुआ है, माँ को हुआ है, तो हर सूरत में जेनेटिक टेस्टिंग करें। अगेन, जेनेटिक टेस्टिंग इज नॉट वेरी अफोर्डेबल एंड नॉट एज यूनिवर्सली अवेलेबल as it should be in a country like Pakistan, which has one of the highest incidence of breast cancer, 40,000 deaths a year. वो तो deaths हैं, incidence इसके 100,000 से ऊपर है। सबके सबकी डेथ तो नहीं होती है, लेकिन आपकी जो डिटेक्शन है और उसके बाद पता चलता है डायग्नोसिस के ब्रेस्ट कैंसर है, वो तो नंबर आपका 5 फिगर्स में जा रहा है। तो ये हमें जरूरी है ये जानना कि ये जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भी हमारे पास अफोर्डेबल है। तो अगेन आई विल यूज द अपेंडेज ऑफ द वर्ड अफोर्डेबल। हमारे यहाँ अफोर्डेबल हेल्थ केयर, अफोर्डेबल स्क्रीनिंग, अफोर्डेबल जेनेटिक टेस्टिंग एंड देन अफोर्डेबल सर्जिकल एंड देन रिकंस्ट्रक्शन, जब तक ये का एक पैकेज नहीं बनता है तो हमारे यहाँ सिचुएशन है उसकी आनी बहुत मुश्किल है। I agree with you that affordable is very important. बल्कि आज ही मैंने कहीं पढ़ा था कि there is a female cancer hospital has been inaugurated, and I think so it's January में उसका है inauguration वगैरह कुछ है, it's going to be opening there. So and this will be in Lahore if I remember, मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा था. This is a good way of, this is the first step towards it, but I think so there's a long way. And हमारे जो private या government जो हमारी इदारे हैं
वहाँ पे इस पूरा एक होना चाहिए. So we'll talk on that as well. तो आप डॉक्टर नाज कह रही थी कि जो कम्युनिकेशन है, so can you give us some advice our audience like what kind of a language communication they should do? Like एक होता है ना कि बोलने का तरीका very important होता है. हमारे यहाँ वो एक जो loves होते हैं, जो wordings होते हैं, people don't say the right wordings. So can you tell us what wording we should say, what how we should communicate? And I understand from Afia is that one should not tell them that, you know, if they haven't become incapable or they have become, you know, useless or anything like that. Maybe my words. देखिए, कम्युनिकेशन की जब बात की जा रही है और Afia, sign out. okay, sign out, but then sign in, please. Thank you. अच्छा, जैसे अभी आपने बात की कि कम्युनिकेशन ऑफ वर्बेटम, ऑब्वियसली कम्युनिकेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ये नहीं कहती कि कम्युनिकेट क्लाइंट को नहीं करना चाहिए. क्लाइंट को कम्युनिकेट करना चाहिए कि जी आपका बीमारी क्या है और किस हिसाब की है. हमारे यहाँ चीज को उस यानी बीमारी को उस तरीके से समझाया नहीं जाता. अच्छा, फिर हमारा नॉन वर्बल लैंग्वेज और वर्बल लैंग्वेज भी इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. आप अगर किसी क्लाइंट को, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, प्रेजेंटेशन करा रहे हैं, कोई उनको क्या कहते हैं, अपने बिजनेस स्टूडेंट्स को सिखा रहे होते हैं कि भाई हाउ टू गिव फीडबैक, तो हम कहते हैं कि जी सबसे पहले आपने सैंडविच टेक्निक यूज करनी है, जिसके अंदर पहला आपका जो है वो पॉजिटिव आएगा, फिर आप उसकी कुछ एरिया ऑफ ग्रोथ बताएंगे, और फिर उसके बाद जो है ना आपने फिर दोबारा कोई उसी पॉजिटिव और एरिया ऑफ ग्रोथ को आपने मिक्स एंड मैच करके एक अच्छे तरीके से उस बात को एंड करना है. ठीक है, whenever you are in an organization and you have to give a feedback to some kind of presentation and all. अच्छा, हमारे यहाँ ये चीज है ना वो इस तरीके से सिखाई नहीं जाती. हमारे यहाँ वो डॉक्टर स्ट्रेट फॉरवर्ड या तो बात करते हैं कि जी देखिए आपको ये ब्रेस्ट कैंसर है और आप जो है ना वो आपका इस हिस्से को जो है हम ये करेंगे और वो सारी चीज करेंगे. ठीक है, बहुत सारे मेरे पेशेंट्स आते हैं जो इस बात को भी उन्होंने ये चीज कही है कि जी हमें इतना डायरेक्ट वे में बता दिया गया कि हमें समझने का मौका नहीं मिला, हमारी फैमिली को संभलने का मौका नहीं मिला. ठीक है, कुछ क्लाइंट्स ये भी कहते हैं कि जी बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी हैं कि जो बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, जो मैंने तरीका बताया आपको उस हिसाब से बताते हैं कि जी वो आप बहुत आराम से, कि देखें बहुत सारी बीमारियां होती हैं कि जो इंसान को हो सकती हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि कोई इनका इलाज ना हो. तो आप एक पॉजिटिव लाइन से शुरू करें और फिर आप उस क्लाइंट को आहिस्ता आहिस्ता मेंटली प्रिपेयर करें कि जी वो व्हाट यू हैव टू से नेक्स्ट, वो सुनने के लिए तैयार हो जाए. ठीक है, हमारे यहाँ बहुत मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि जिनमें हमारे यहाँ वो तैयार नहीं करते और क्लाइंट को डायरेक्ट बता देते हैं. अच्छा, फिर एक दो चीजें मैंने ये भी देखी है, इफ दैट पर्सन इज इटसेल्फ अ डॉक्टर, ठीक है, और उसको कोई कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है या कोई और किस्म का कैंसर डायग्नोज हुआ है, तो वो क्या करते हैं जी, वो कहते हैं कि जी आप रिपोर्ट्स देख लें, पूरी रिपोर्ट्स देख लें. वो पूरी रिपोर्ट्स उनके हाथ में उठा के दे देते हैं. और वही वाली चीज है ना कि अक्सर तो वेंट से भी लोग उठ के वापस आ जाते हैं इफ दे हैव विल. बट इफ यू आर गिविंग बाय इटसेल्फ कि जी ये ले जी ये देखें और ये है जी मौत का पैगाम और आप इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं और ये और आपका जो है ना मसला बिल्कुल बिगड़ चुका है, वो रिपोर्ट के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है और उनको हैंड ओवर कर देता है और वो कहते हैं जी आप खुद पढ़. अपने आप से अपनी एंजाइटी को सेव करने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता, तो वो क्लाइंट को कहते थे कि जी आप खुद पढ़ लें. जिसको थोड़ी सी भी समझ होगी वो अगर वो डॉक्टर नहीं भी है इटसेल्फ और उसको थोड़ी सी भी समझ होगी, वो समझ जाएगा कि जी वो कहाँ पर है और किस स्टेज पे खड़ा है और उसकी मोटिवेशन डाउन हो जाएगी. ऐसे क्लाइंट को वापस लेकर आना अपनी मोटिवेशन पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि हमें डॉक्टर्स के लिए भी इस तरह के प्रोग्राम्स जो है वो उनके लिए डिजाइन करने चाहिए कि जिसके अंदर उनको ये हो कि वर्बल और नॉन वर्बल और वर्बेटम्स कैसे यानी उनको जो है वो पोर्ट्रे करना है. ठीक है, ग्रेट. वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम. ये फोकस ग्रुप वाला पार्ट पर हम बाद में आते हैं. लेट्स आफिया इज बैक विद अस. इज आफिया, आर यू देयर? Alright, so tell me, Dr. Naz, मुझे ये बताएं कि जो are there any support groups or resources where the family or the cancer patient can go and take help, or
talk to people who have gone through it or who are also going through it, and a grouping hoti hai, that also helps with the mental peace and positive approach and everything. तो वो थोड़ा सा मुझे quickly बता सकें, because we are very short of time now. देखिए, We have another if client wants to discuss something related to his or her anxiety with respect to cancer or something, they can go to a therapist, they can go to a counselor, they can take help from their doctor कि जी आप मुझे किसी ऐसे के पास रेफर कर दें, बिकॉज देखें अगर मैं बाहर के मुल्क के हवाले से बात करूं तो दे हैव ऑलरेडी अ टीम, उस टीम के अंदर उनमें साइकेट्रिस्ट भी है, उसमें ऑनकोलॉजिस्ट भी है, उसमें साइकोलॉजिस्ट भी है, उसमें इवन सोशल वर्कर भी है। हमारे यहाँ इस तरह की टीम्स का जो है ना थोड़ा सा फुकदान है, कहीं कहीं अब मैं देखती हूँ कि इस तरह की टीम्स आ रही हैं, सामने आ रही हैं कि जिसके अंदर एक ओवरऑल एक टीम है और उन्हें उनके पास अगर एक क्लाइंट है तो उन्हें पता है कि जी ऑनकोलॉजिस्ट का क्या रोल है, सोशल वर्कर को अगर वो सही हो जाता है तो वो उसे दोबारा उसको जिंदगी में वापस कैसे उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज उसको किस तरीके से करना है, थेरेपिस्ट जो है उसको उसकी एंजाइटी और उसकी डिप्रेशन विद फैमिली सपोर्ट जो है वो थेरेपिस्ट देता है। हमारे यहाँ ये चीजें थोड़ी सी कम है, बाहर के ममालिक में ये चीजें मैं ज्यादा देखती हूँ, हमारे यहाँ थोड़ी सी ये चीजें कम है, हम that's एक important. खुले तरीके से उन्हें छोड़ देते हैं। तो अगर एक प्रॉपर टीम सिस्टम हमारे यहाँ बना दिया जाए फॉर अवेयरनेस, फॉर गाइडेंस, फॉर काउंसलिंग, फॉर थेरेपी, तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ बचने का और अपने आप को दोबारा से बेहतर जिंदगी की तरफ लाने का रुझान जो है वो बढ़ जाएगा। Oh, that's very important. I am sure my audience is also listening to all of this. Is Afia back? Afia? Yes, I am. Okay. Can you So, hear me? remember the question, or should I repeat that? नहीं, आई रिमेम्बर द क्वेश्चन। आपने कहा था कि ये जब पता चल गया कि फैमिली में है तो देन व्हाट नेक्स्ट, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स, क्विकली क्योंकि आपके पास टाइम कम है। एक तो ये कि प्लीज 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 फैमिलियल मैरिजेस से को जो है ना इसको खत्म करें, स्पेशली अगर आपका डिटेक्टेड है, आपको पता है कि आपकी फैमिली में ये बीमारी है, तो देन ये जो कजन मैरिजेस का हमारे यहाँ रुझान है, इसको हर सूरत में इससे दूर हटने की कोशिश करें, क्योंकि ये जाहिर है वो फिर अगली नस्ल को और ज्यादा वो उसकी जीन्स जो है वो इम्पैक्ट होती है। दूसरी चीज ये कि इसमें जो उन्होंने अभी डॉक्टर इरफान ने कहा, इट्स सो इम्पोर्टेंट कि एक ग्रुप होना चाहिए जो कि डील करे बीमारी से, सिर्फ डॉक्टर ही का ये काम नहीं है, देयर आर अदर थेरेपिस्ट एंड, लेकिन इसमें रेफरल होना चाहिए। आई थिंक डॉक्टर्स को भी रेफर करना चाहिए कि आप जो है ये इतनी बड़ी आपके एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी जिंदगी के अंदर, एक बहुत बड़ी बीमारी के साथ आप डील कर रही हैं, तो आप फलां से बात करें, अपने फियर्स को, अपने एंजाइटी को उनके साथ शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से फिर जाहिर है जैसे ये बात कर रही हैं, वो समझाने का भी तरीका अलग होता है थेरेपिस्ट का या काउंसलर का, तो दैट जी, टेक्स अवे अ लॉट। अच्छा, जो जो आप अच्छा, और जब अगर आपको पता है कि ये आपकी फैमिली में एक वो अनब्रोकन चेन चली आ रही है इसकी, जी, please get the younger generation attuned and they aware of it and take them to the doctor and get them into the screening process. मेरी दोनों बेटियां जब 18 साल की हुई थी and that's when they went to the doctor. The first time they turned 18 and I took them to the doctor, जिसने उनको उस वक्त तो इतनी छोटी उम्र में आपके कोई इन्वेसिव किस्म के भी टेस्ट नहीं होते, लेकिन ये कि आपको वो बताते हैं कि आपने चेक कैसे करना है। हमारे यहाँ एक जिस जिस हिसाब से हमारे यहाँ पॉपुलेशन फैल रही है, तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन के लिए या बर्थ के लिए अक्सर खवातीन डॉक्टर्स या मिडवाइफ्स के पास जाती हैं, ठीक है, होम बर्थ बेशक हो, लेकिन मिडवाइफ्स ये जो चेक करने का या स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस है, दिस शुड ट्रिकल डाउन टू दैट लेवल कि जब वो उनकी मेटर्निटी के लिए आती हैं अपने इश्यूज के लिए, तो उस वक्त उनके ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी करें। ये बहुत जरूरी है हमारे यहाँ, क्योंकि लोगों को एग्जाम खुद नहीं करना था, पहली मर्तबा अगर कोई चेक करते हैं तो उसमें कुछ अगर डिटेक्ट होता है तो देन दे कैन बी रिफर्ड इवन बाय एट दैट लेवल टू स्पेशलिस्ट। हमारे यहाँ ये इस चीज का भी भुगतान है, और हमारी जो उस लेवल पे भी इस फैसिलिटी या इस सर्विस को बढ़ाने की जरूरत है। तीसरी चीज ये कि आपने मेरी बेटी का जिक्र किया जिसने एक बहुत रेडिकल स्टेप लिया है, जिसमें जाहिर है मतलब वो एक माँ होने के नाते से एक तरह से मेरे लिए बहुत बड़ी एंजाइटी का वो बायस था, लेकिन एक कैंसर सर्वाइवर होने के नाते से आई एक्चुअली सल्यूट द स्टेप शी टुक। और मेरी पूरी फैमिली में जितने लोगों को सबको पता चला, उन्होंने कहा कि शी हैज बीन द ब्रेवेस्ट,
क्योंकि उसने जिसको डॉक्टर्स की टर्म में प्रोफिलेक्टिक सर्जरी कहते हैं, यानी प्रिवेंटिव सर्जरी कराई है उसने। Oh wow. He has had a breast removal surgery done and reconstruction done. उससे उसके अपने चांसेस जो पहले उसके जीन टेस्टिंग में पॉजिटिव आया था, जितना हाई उसकी ससेप्टेबिलिटी थी, क्योंकि मदर एंड फादर दोनों की तरफ से थी, वी बिलोंग टू द सेम फैमिली, हमारी भी कजन मैरिजेस हुई हुई है, तो उसमें वो ड्रास्टिक रिडक्शन ऑफ चांसेस, क्योंकि उसने कहा कि इफ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ इफ, no, I mean, if it is a question of when and not if, I'm not going to wait for the when. I'm going to Oh. take things in my hand and I'm going to May take charge. तो उस कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी उस ट्रॉमा से गुजरे, कि वो उसकी माँ को ये सब कुछ हुआ और वो पूरे उस साइकिल से गुजरे जो उसने अपनी कजन को, जो मेरी भांजी है, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी है, उससे गुजरते देखा। तो she said that I'm going to take this step. during her pregnancy, she had this. That was during her pregnancy in which उन्होंने, उनकी कोई गायनेकोलॉजिस्ट ने ना फैमिली हिस्ट्री ली, ना उसको चेक किया, जिस वजह से मेरे जहन में ये आया है कि लामोहल्ला औरतें जाती हैं, मिडवाइफ्स के पास जाती हैं, डॉक्टर्स के पास जाती हैं, क्लिनिक्स में जाती हैं, मैटरनिटी होम्स में जाती हैं, अगर उस जगह पे भी उनका चेकअप हो जाए, आई एग्री कि प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी की शेप भी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, ब्रेस्ट की शेप, बिकॉज आई यू विल बी लैक्टेटिंग लेटर ऑन, तो लेकिन अगर कोई सिस्ट भी है या उसमें कोई लंप है तो वो तो पता चल सकता है ना, उसके फिर उसके बाद मजीद इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। लेकिन अगर आप लाइल्मी ही में अपने आगे चले गए और जब पता चला तो इतनी देर हो गई, तो उसका फिर और क्या तोड़ है जब हमारे यहाँ इस तरह से यूनिवर्सल हेल्थ केयर नहीं है। तो मेरी जब वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, बिफोर यू गो टू द डॉक्टर, दे हैव लाइक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स व्हाट यस यस आपके भाई ये एंटी एलर्जीज किस पे ही है। इसमें ये भी होना चाहिए कि भाई आपकी फैमिली में कैंसर का क्या है, बिकॉज नॉट नेसेसरी एवरीवन हैज द ब्रेस्ट एंड ओवेरियन, बट देयर आर अदर फीमेल्स जिनकी फैमिली में अदर किस्म के भी कैंसर्स होते हैं, राइट? नहीं, वो तो सो दूसरे भी आप पूछते ही है ना कि ब्लड प्रेशर है आपके फैमिली में, आपके फैमिली में डायबिटीज है या नहीं। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी एज अ रेगुलर क्वेश्चन नीड्स टू बी एडेड, कंसिडरिंग कि पाकिस्तान का इंसिडेंस इतना ज्यादा हाई है। अगर नहीं होता इतना हाई तो फिर ये क्वेश्चन आपका एक मैंडेटरी क्वेश्चन के तौर पे जरूरी नहीं था, लेकिन आई थिंक होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास और तरीके हैं नहीं कोई डिटेक्शन के, क्योंकि खुद से नहीं औरतों को पता होता ज्यादातर को। अब तो आई अंडरस्टैंड 2 decades पहले and अब में अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, एवरी ईयर देयर पीपल आर ट्राइंग, द कंपनीज आर ट्राइंग, individuals are trying to give as much as awareness through seminars, to different ways, to going down to the lower grass, but again I think to the grassroots level या mid level tier में अभी भी इसकी awareness में बहुत बहुत कमी है, and उसका एक वो है। So let's try concluding this. I would, अगर आफिया आपने भी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रेज किए, which I think so as a society, as a government, as a organization, hospitals, and even Dr. Naz and you, उन सबको अगर हम ये incorporate कर सकें, अगर starting from now or starting from as soon as possible, तो it's very possible that हम अपने जो ratio of reducing the breast cancer in women can be done, reduced. हमने हमेशा औरतों का भी सुना है कि ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, रिसेंटली मुझे पता चला कि दे आर वेरी फ्यू मेल्स जिनको भी उनको भी ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। There is a 1% ratio for men. 1% आदमियों को भी होता है, 1% अगर हम पूरी पॉपुलेशन में बात करें तो। Exactly. So let's not eliminate that, but yes, कि female is the main issue. So अगर हम देखते हैं तो we have to say when it comes to a supporting your the family member who has just gotten the news of breast cancer, who's going through it. So every family member should stay positive. People around them should stay positive. People linked to those family members should stay positive and say positive words. And having a female, someone going through, आप एक डॉक्टर के पास रहने चले जाते हैं तो कितना मुश्किल होता है एक रात को, and फीमेल की पूरी जिंदगी चेंज हो जाती है, because the thing is that she feels like she is going to become
not look nice. She's not going to be presentable. Her hair is not going to be there. Her eyebrows are not going to be there. So we need to be very supportive to them. We need to encourage them. We need to be, and in support में हमें ये नहीं दिखाना कि they are like they are useless for them. They are as useful for us. Their personality is still the same. That's nothing, and it's all by they have not. I mean, cancer is not something born by them, given by them, given to them. So the thing is that we need to be patient. We need to be helpful to them. We need to join hands with them. अगर female से एक ही female घर में पूरा खाना पका रही है, तो the house, other people of the house means बच्चे हैं या husbands हैं या other brothers हैं या sisters हैं, they should also support and help them in the household stuff ताकि उनके ऊपर stress ना पड़े. We want them not to have too much stress, but yet also we want them to work on a regular basis so they are less thinking and they're not going psycho. Okay, now you said this, may I just end it maybe, well, it's not really a joke, लेकिन जिस तरह से इन्होंने कहा कि पूरी फैमिली का एटीट्यूड ऐसा हो गया कि rather than a help they became a hindrance, और उन्होंने इतना तारी कर लिया अपने ऊपर के उसको भी उन्होंने कहा कि जैसे वो इनवैलिड हो गई है, वो बच्ची बन गई है. I will give you an example. अब मुझे हंसी आती है, उसका मुझे गुस्सा आया था. That when so my husband didn't smoke at that time, and one day I caught him smoking just a couple of days after all this happened, you know, all the diagnosis and everything. And I said, what is this? Why have you taken it? कहता बहुत टेंशन हो रही है. तो मैंने कहा बीमारी मुझे हुई है, टेंशन तुम्हें हो रही है, तुम सिगरेट पी रही हो, मुझे चरस ला दो फिर. I mean, what is this excuse? I don't know what. So at that time I said that, but I realized it has a different way. It does traumatize the rest of the family also. But you know, they also need to realize that the person at the center is looking for support rather than you falling apart. Yes. तो अगर इस तरह की फैमिली है, तो जैसे इनकी पेशेंट ने इनको कहा था कि आप फैमिली काउंसलिंग करें, I think that's a very good suggestion and very good option, and it should be available. कि बाकी फैमिली मेंबर्स किस तरीके से फंक्शन करें और किस तरीके से मतलब वो उसको सपोर्टिव हो विदाउट बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव, विदाउट मेकिंग देम यूजलेस. तो दैट्स अ गुड थिंग. और उसमें शेयरिंग ऑफ बहुत सही आपने कहा कि हॉरर स्टोरीज बहुत लोग शेयर करते हैं, अच्छी स्टोरीज नहीं शेयर करते. आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू शेयर इंस्पिरेशनल स्टोरीज. मेरी एक और दोस्त हैं, उन्होंने अपना कोई काम नहीं छोड़ा. उनकी एक इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है. उन्होंने ड्यूरिंग हर ट्रीटमेंट, इमीडिएटली आफ्टर ट्रीटमेंट, हजार लोगों के इवेंट मैनेज किए परफेक्टली. उन्होंने सब कुछ किया. सैल्यूट टू हर एंड ऑल्सो सैल्यूट टू हर चिल्ड्रन हु सपोर्टेड हर इन दैट वे. सो यू सी, ये समझ की बात है कि फैमिली की सपोर्ट का ये मतलब नहीं है कि वो आपको बिल्कुल हथेली का छाला बना ले, वो आपकी स्ट्रेंथ बने. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Apart from that, हमने जो डिस्कस किया कि how we can create a support system में in terms of health care में हम किस तरह से क्या चीजें हम क्रिएट कर सकते हैं in order to उसको हम ब्रेस्ट कैंसर की जो हमारे परसेंटेज को लो करने के, उसमें ये कि there are lot of funds, global funds मिल जाते हैं. We should have small clinics जिसमें स्क्रीनिंग हो सकती है, affordable screening, affordable genetic testing हो, health care की चीजें हो. Plus the doctors should also be saying language जिस तरह से हो. Plus the thing is that जो कैंसर की जो पेशेंट्स है या डॉक्टर्स है, दे शुड बी एन इकोसिस्टम, एक टीम बिल्ड होनी चाहिए विद द डॉक्टर, एंड डॉक्टर्स आल्सो रिफरिंग people to the psychiatrist or therapist or social workers to help them come out with this whole and help them go through the whole process and journey. Short, long journey. Everyone needs a lot of patience. स्टाफ के साथ ही काम करें तो वो सबसे अच्छा होता है. अपने psychiatrist, there's no harm talking to people you don't know. इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई टाबू नहीं है. अपने आप बेहतरीन होंगे, आपके बच्चे खुश रहेंगे, आपकी फैमिली खुश रहेगी, सब सही रहेगा. And it's a minimum. Breast cancer is not a big thing. It's इलाज इसका आसानी से होता है.
Thank you so much. I really appreciate Afia and Dr. Nas to come and join us in our first of our series of webinars. We will be, inshallah, coming back in next month with another issue or topic, any topic which we like we shared some positive image to the in the society and give them a better output. Um, uh, Thank you so much, and I would say Allah Hafiz. Thank you. Thank you. Thank you for Okay, thank having you me. so much. Thank you so much. Allah Hafiz. Okay.